Hello dear students. Today we are going to start chapter that is wave optics. This topic is related to light. Now all of you know that light, it is a form of energy that we studied in the lower standards. Light is nothing but energy emitted from the source of energy. There are two different sources of energies. First is called as natural source of energy, natural source of light, and second is artificial source of light. Natural source, for example sun, star, etc., they are the natural sources. Naturally they emit light. And second source is an artificial source that we observe in the daily life. For example, fluorescent lamp, tube light, candle, etc. These are the artificial sources. Now we study that light in optics. एक्चुअली लाइट, ये जो टर्म है ना, ये ब्रॉड सेंस में एक बहुत बड़ा टर्म है. हमारे लिए तो लाइट जो होता है वो एक विजिबल लाइट होता है, रेड, वायलेट एक्सेट्रा, ये जो कलर उसमें है ना, ये विजिबल लाइट. बट इन अ ब्रॉड सेंस दे आर विजिबल एज वेल एज इनविजिबल लाइट. बहुत टाइप के लाइट रेडिएशंस होते हैं, उनका वेवलेंथ अलग अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है. एंड ड्यू टू दैट light possesses different properties. It possesses different properties. उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है. अगर कोई लाइट सरफेस पे इंसिडेंट होता है, इट इज व्हेन इट इंटरेक्ट्स विथ मैटर पार्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा. व्हेन इट पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट गेट रिफ्रैक्टेड. ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो लाइट पोजेस करता है. डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है. एंड वी स्टडी ऑल दिस प्रॉपर्टीज इन अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स. ये सब हम ऑप्टिक्स में स्टडी करने वाले, लाइट का बिहेवियर स्टडी करने वाले. So let us see the definition of optics, branch optics. Optics, this is the branch of physics that studies behavior and properties of light, including its interaction with matter or matter particles. बिहेवियर का मतलब क्या है कि लाइट पार्टिकल है तो लाइट वेव है क्या, लाइट कौन सा फॉर्म पोजेस करता है, लाइट का नेचर क्या है. प्रॉपर्टीज मीन्स डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट. दे आर द प्रॉपर्टीज. We study all these properties in a branch of physics that is called as optics. Now we call optics as an optical science. We call optics as optical science. Now there are three main branches of optical science, three major branches. We can roughly divide it in three parts. First is called as ray optics. Ray optics. It is also called as geometrical optics. Geometrical का मतलब क्या है? ये रे ऑप्टिक्स में हम ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री यूज करते हैं. जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के जो फिनोमिना है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम ज्योमेट्री यूज करते हैं. सो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. नाउ इन रे ऑप्टिक्स वी अश्यूम दैट लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रैवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन. लोअर स्टैंडर्ड में जो लाइट स्टडी किया है वो सब रे ऑप्टिक्स का पार्ट है. हम ऐसा अश्यूम कर दे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में पास होता है, तो अश्यूम कर दे, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अश्यूम कर दे, इसका मतलब क्या है, लाइट स्ट्रेट लाइन में पास नहीं होता. यस, लाइट डज नॉट ट्रैवल इन स्ट्रेट. एक्चुअली लाइट ये वेव है, लाइट स्ट्रेट लाइन में पास नहीं होता है. इट्स वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल. इट्स वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल. इट्स स्पीड इज वेरी लार्ज. देयरफॉर इट अप्रोक्सीमेटली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. So we assume the rectilinear propagation of light in the ray optics. ये हमने 11th में स्टडी किया है. सेकेंड ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, इट इज वेव ऑप्टिक्स. इट इज वेव ऑप्टिक्स. इन द वेव ऑप्टिक्स वी अश्यूम दैट light travel in the form of waves. Light travel in the form of waves. This is also called as physical optics. हम इस टॉपिक में वे ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं. एंड थर्ड ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, इट इज क्वांटम ऑप्टिक्स. क्वांटा मीन्स light particle.
We also call this as photon. Quantum optics, we assume that light is emitted in the form of particles. इसका particle nature हम assume करते हैं. Actually, if we go before the 17th century, 17th 16th century में हम गए, before the 17th century, the exact nature of light was unknown to everybody. It was unknown to the scientists as well as rest of the world, etc. तो किसी को पता नहीं था कि लाइट ये क्या है, ये पार्टिकल है, वेव है. एंड इन द same century, different scientists propose their theories explain the nature of light. First scientist was Sir Isaac Newton, afterwards Huygens. ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट के थियरीज प्रपोज किया. Actually, there were two group of scientists. First group of scientists believe that light is emitted in the form of particle. लाइट का पार्टिकल नेचर, उनको ऐसा लगता था कि लाइट पार्टिकल है, ये पार्टिकल के फॉर्म में पास होता है और ये स्ट्रेट लाइन में पास होता है. उस ग्रुप में था न्यूटन, मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड सेकेंड group of scientists believe that light is a wave. Light is a wave. And that group consists of scientists like Huygens, थॉमस यंग, मैक्सवेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर हमारे माइंड में भी आता है कि एक्चुअली लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है. Answer we find in this topic actually. But remember that light is particle as well as wave. लाइट का एक्चुअली डबल नेचर है, ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर. ये पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है. ये दोनों साइंटिस्ट का ग्रुप खुश हो जाएंगे. लाइट वेव भी है और ये पार्टिकल भी है. Now in this topic we are going to study some theories related to the nature of light. Theories explaining the nature of light. Let us see the first theory related to light, that is Newton's corpuscular theory. In this theory, we assume that light is emitted in the form of particles, in the form of corpuscles.